morning, dear students. How are you? I hope you all are well, taking a good care of your health as well as your study. Dear student, we have already completed in our previous part question number 4, 5, 6 and 7. Now the pending question was 8, 9 and 10. Okay, question number 10 I have already done here on the blackboard. Okay, now let us begin with our practice set 3.1 with question number 8, which is given as you can see in the diagram. A diagram is given here. Okay, and what information is given here? Line AB means this line AB is parallel to line CD and line PQ is transversal. Okay, now ray PT and ray QT both are intersecting at a point T. Okay, and even one more information is given here. Ray PT and ray QT are bisector of angle BPQ and PQD. Okay, respectively. It is your D. Okay. Now you have to prove here this angle PTQ will be equal to 90. So let us begin with the information given in the question. First, what information is given here? Information is given here. Line AB is parallel line CD and line PQ is its transversal. Okay. Now, if these two lines are parallel and this line is transversal, then this angle BPQ and angle PQD both will form an angle of interior, and the sum of the interior angle is always supplementary. Okay, so therefore here measure angle BPQ plus measure angle PQD is equal to 180. What is the reason here? Interior angle. So write down here interior angles. Now I am going to do here one thing. Let us divide each angle which is given here by 1/2. Okay, so I am going to divide both the side by 1/2 here. So dividing by 1/2 on both sides. Okay, I am going to divide here 1/2 measure angle BPQ plus 1/2 measure angle PQD is equal to 1/2 into 180. Okay, now here half of measure angle BPQ. Here see BPQ. So I can take the half of BPQ here like TPQ because ray PT is its angle bisector. So you can take here angle TPQ plus here also half of angle PQD. I can take the half of this angle PQT. Sorry, PQT is there now. This is whole angle. I can take here half angle of this PQT. Okay, so I am going to take here PQT. Okay, and here if you divide it, you will get here 90. So write down here 90. Now you have to state here what is the reason why we have taken here this half angle. Because ray PT and ray QT are bisector of angle BPQ and angle PQD. That is the reason. You can take either of the angle of half. कोई भी आप half ले सकते हो. इसको लो या मुझे यहाँ पे इसकी जरूरत थी, मैंने ये ले लिया. Now I am going to give it equation 1. Now consider this triangle. In triangle PTQ, we know well the sum of the measure of all the angles of triangle is always 180 degree. So I am going to add here all three angles. So let us begin here. Measure angle PTQ plus measure angle TPQ. First this angle, now this angle TPQ, and finally this third one angle PQT.
PQT is equal to 180. Now what is the reason here? You have to write down here the sum of measure of all angle of triangle is 180. Okay, you can write in the word. I'm just write here in the symbol form. Okay, so now write down here measure angle PTQ plus. Now you can notice here measure angle TPQ plus measure angle PQT is here forming an angle is equal. Both have a value of here 90. Okay, means this angle and this angle, the value of this both angle is 90. We have already got here in the equation 1. Okay, so you can put here the value of this both angle. This is 90 plus it is equal to 180. Now this is plus, on other side it will get subtracted. So measure angle PTQ is equal to 180 minus 90. So the value of measure angle PTQ we will get here 90. So here we have proved that, which was asked in the question, prove that measure angle PTQ is equal to 90, and we have got here the value. Okay, the first question is here over, which was your question number 8. Now question number 9, which is given in your textbook. You have given this diagram, and based upon this diagram you have to find out measure angle A, measure angle B, and measure angle C. Means you have to find out the value of these three angles. Sorry. Now what information you are opting from here? You can see here this angle and this angle, these both are forming vertically opposite angle, and the vertically opposite angles are always congruent. So let us begin with this, sir. Write down measure angle B is equal to 70, and what is the region? Vertically opposite angles. Now give it equation 1. Here also you can notice this angle and this angle, both are forming an angle in linear pair, and the sum of the linear pair angle is always supplementary. Okay, means 180 degrees. So you can write here measure angle C plus 100 is equal to 180, and what is the region? An angle in linear pair. Okay, now this is plus 100, on this side it will be minus 100. So you will get here measure angle C is equal to 80. Give it equation 2. Now I have got here the measure of angle B, that was 70, measure angle C, that was 80. Now only one thing is remain here, your measure angle A. Now if you notice here this triangle, here this angle and this angle will form a degree of 180, because the sum of measure of all the angles of triangle is always 180. So write down here measure angle A plus measure angle B plus measure angle C 180, and same reason you have to write it down as we have wrote in question number 1. Sorry, question number 8. Sum of measure of all angle of triangle is 180. Write down the same reason here. Now write here measure angle A plus the value of B we got here is 70. So put here the value 70. And the value of measure angle C we have got here it is 80. So write down here 80 is equal to 180. And state here reason how you come to know their value from equation 1 and 2. Now add up these two. What do we get? 150 is equal to 180. This is plus 150. On this side it will get subtracted. So 180 minus 150. So what we will get here? The measure angle A is equal to 30 degrees. So here we have find out all three measures angle which was asked in the question. Means the question number 9 is also over. Now question number 10 I have already done it on the blackboard, because मुझे नहीं पता था कहाँ तक जाएगा, तो मैंने स्पेस को एडजस्ट करने के लिए पहले से ही सम को सॉल्व कर दिया है. ठीक है, आप देख सकते हो इन दिस क्वेश्चन
क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है? लाइन डी इज पैरेलल टू लाइन जीएफ, दिस बोथ लाइन आर पैरेलल एंड ईजी एंड रे एफजी बोथ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीईएफ। मतलब ये जो दिया गया है ईजी इस एंगल डीईएफ का बाइसेक्टर है और एफजी एंगल डीएफएम का बाइसेक्टर है। तो आपको प्रूफ करके देना है यहाँ पे कि एंगल डीईजी ये हाफ किसका होगा? एंगल ईडीएफ इस एंगल का क्या होगा? हाफ होगा। ये आपको प्रूफ करना है। और दूसरा प्रूफ करना है कि ये साइड ईएफ और ये साइड एफसी ये दोनों भी इक्वल है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, मैंने इसे आपके लिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से किया है। पहली बात तो आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है कि रे ईजी इस एंगल डीईएफ का क्या है? बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो चलो मैं ये जो दोनों एंगल है डीजी और जीईएफ इन दोनों को मैं एक्स मान लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे याद किया। क्यों मैंने किया है? क्योंकि रे ईजी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीईएफ, तो इस दोनों एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो रे एफ जी एंगल डी एफ एम का क्या है? बाइसेक्टर है। तो चलो ये जो दोनों एंगल है कौन से? डी एफ जी और जी एफ एम, मैं दोनों को क्या मान लेता हूँ? वाई मान लेता हूँ। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अभी आप जानते हो कि ये जो जैसे हमको इस सम में दिया गया है कि डी और एफ सी दोनों क्या है? पैरेलल। आप एफ सी बोलो या डी एफ बोलो। तो चलो मैं इसमें जो ईजी है मैं इसका ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? ट्रांसवर्सल। और आपको मालूम है ट्रांसवर्सल पे बने जो भी एंगल अल्टरनेट बनते हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंगल ले लिया डी ई जी। देखिए ध्यान से देखिए डी ई जी और ई जी एफ। देखो जेड बना। अगर जेड बने थे कौन से एंगल होंगे? अल्टरनेट। तो एक बात बताइए, ये डी ई जी और ई जी एफ यहाँ पे मैंने इसको क्या एज्यूम किया है? x। तो ये भी कितना होगा? x। दोनों कितने हो जाएंगे? x क्यू अल्टरनेट एंगल। और एक चीज आप और नोटिस कर सकते हो इसमें DEF, ठीक है, और GFM मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि DEF और GFM बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक बात बताओ, जो आपका DEF है, DEF में ये x और ये x कितने x आ गए? 2x। और जो GFM है आपने इसको पहले क्या माना है? y। ठीक है, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 2 और ये था आपका इक्वेशन 1। अब एक और चीज आप इसमें देख सकते हो, एक और इसमें अल्टरनेट एंगल बन रहा है। कौन सा? GFD ये और EDF। देखो जेड का से फॉर्म हुआ। ठीक है, अगर ये y है तो ये भी क्या होगा? y। देखिए आप कौन सा है? GFD, इसको आपने क्या एज्यूम किया है? y। और दूसरा है EDF, ये दोनों मिलकर जेड बनाना है तो ये भी कितना हो जाएगा? y। दोनों y y हो जाएंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल। अब बताइए GFD, ठीक है, GFD आपके एजम्पशन के हिसाब से ये y है। मैं इसको वैसे ही लेने लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ करना है यहाँ पे EDF। मुझे EDF की जरूरत है, मैंने इसको वैसे ही यहाँ पे रख दिया। लेकिन आप देख सकते हो ये जो GFD है, जो y है, इस y की वैल्यू किसकी इक्वल टू है? 2x की। मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर दिया? 2x। और ये जो x है, ये x मतलब आपका क्या है? आपको यहाँ जरूरत है DEG की। तो देखो ये भी x है और ये भी x है, मुझे यहाँ पे जरूरत है DEG की। तो मैंने इस x की जगह पे क्या ले लिया? DEG। अब क्वेश्चन बहुत क्लियर होगा माय डियर स्टूडेंट। यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 समझ सकते हो। ये मल्टीप्लाई इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। आपका जो पहला था प्रूफ हो गया। ठीक है, हियर वी हैव प्रूफ आवर फर्स्ट वन। और आप देख सकते हो पूरे क्वेश्चन के दौरान हमने ये फाइंड आउट कर दिया। ये इस पूरे ट्रायंगल में देख लीजिए, कौन से ट्रायंगल में? EGF में इसकी वैल्यू भी x है और ये एंगल की भी वैल्यू x है। ये कौन सा एंगल हो गया? आइसोसेलेस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों एंगल की वैल्यू क्या है? कॉमन है। और आपको मालूम है अ ट्रायंगल व्हिच हैव टू एंगल इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड द अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव इक्वल साइड्स। दोनों के साइड्स में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मतलब ये एंगल, अगर ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो
इसका अपोजिट साइड कौन सा है, EF, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, GF, यानी ये दोनों साइड्स में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, फ्रॉम द आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड जो एंगल उसमें कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके अपोजिट साइड्स पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपने यहाँ पे अपनी दोनों चीजों को प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे वी हैव फिनिश आवर प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 एंड यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस in your classwork notebook, and as usual you will show this work in our HPN group. Okay, so we will begin our next practice set 3.2 in the next video. So for today, thank you very much. Meet you in the next video.